નમસ્કાર મિત્રો, દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025-26 આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોઈશું। તો મિત્રો, તમે જો મારી ચેનલ ઉપર પહેલીવાર આવ્યા હોય તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી લેજો, જેથી આવનારા બીજા નવા વિડીયો ઝડપથી તમારા સુધી પહોંચી શકે। તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયનું પેપર સોલ્યુશન જોઈએ। પ્રશ્ન 1 એ સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો। તો એમાં પહેલા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ए, हमारी प्राचीन सभ्यता अत्यंत विकसित और सुनियोजित थी। बीजा प्रश्न में जवाब आवશે सी, क्योंकि वे फल की आशा किए बिना निरंतर कर्म करने में विश्वास रखते थे। तीजा प्रश्न में जवाब आवશે बी, जाति धर्म और संप्रदाय की दीवारों के कारण। चौथा में जवाब आवશે सी, बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण मानवता का कल्याण चाहना। त्यार पछी प्रश्न 1 बी, प्रश्नों उत्तर लखो। एमां पहलो और बीजो प्रश्न आपेला छे, तो जुओ एना जवाब में अहींया लखेला छे, तमे जोई शको छो। त्यार पछी प्रश्न 1 सी, प्रश्नों जवाब लखो, पहलो और बीजो। तो बंने प्रश्नों जवाब में अहींया लखेला छे, तमे जोई शको छो। त्यारबाद आगळ जोईए प्रश्न 2, आपणने जे फकरो आपेलो छे एना आधारे आपणे प्रश्नना जवाब लखवाना छे। तो पहला प्रश्न में जवाब आवશે, धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए समय धन से अधिक मूल्यवान है। बीजा प्रश्न में जवाब आवશે सफलता। तीजा प्रश्न में जवाब आवશે सूरज का सही समय पर उगना और ऋतुओं का अपने समय पर आना जाना प्रकृति में समय के पालन के उदाहरण है। चौथा प्रश्न में जवाब आवશે विद्यार्थी जीवन में खेलकूद और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। और पांचवा प्रश्न में जवाब आवશે समय का महत्व। प्रश्न 3 काव्य पंक्ति पूर्ण करो। तो जुओ, मैं अहींया काव्य पूरु करी अने लखेलू छे, तमे जोई शको छो। प्रश्न 3 कहानी को पूर्ण कीजिए। जे टोपीवाड़ी वार्ता छे ए टोपीवाड़ी वार्ता एक लीटी आपेली छे, आपणे आगळ वार्ता लखवानी छे। तो दरेक विद्यार्थीओ पोतानी भाषामां मौलिक रीते विचार करी अने आ वार्ता पूरी करशे। त्यार पछी प्रश्न 4, हिंदी फकरो छे एनुं गुजराती करवानुं छे। तो जुओ, मैं अहींया गुजरातीमां भाषांतर करेलुं छे, तमे जोई शको छो। प्रश्न 5, पहेली बनाईए। उखाणुं बनाववानुं छे। पहलू नमक, बीजू बारिश। तो जुओ, बे विषे मैं उखाणुं बनावेलुं छे। विद्यार्थीओ आनाथी अलग रीते पण उखाणुं बनावी शके। त्यार पछी प्रश्न 6, पत्र लिखिए। कोईपण एक विषय उपर विद्यार्थीओए पत्र लखवानो छे। डाबी बाजू सरनामું लखी अने संबोधन करी अने आ विषय उपर पत्र लखवानो छे, जेना जवाब आपणे अहींया लखता नथी। त्यार पछी प्रश्न 7, दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे, इसके बारे में लिखिए। कि गर्मियों में यदि रास्ते में कोई व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर जाए तो आप क्या करेंगे। तो विद्यार्थीओ जे पगला भरशे ए अहींया लखशे। मैं मारी रीते जुओ अहींया जवाब लखेलो छे। विद्यार्थीओ आवी रीते आनाथी अलग पण जवाब लखी शके। त्यार पछी प्रश्न 8 समानार्थी शब्द लखवानो छे। मांझी, तो एमां आवશે नाविक, अने नाविक उपरथी वाक्य पण बनाववानुं छे। प्रश्न 8 विरोधी शब्द कुख्यात, तो विख्यात, अने विख्यात आधारे एक वाक्य बनाववानुं छे। प्रश्न 8 मुहावरानो अर्थ आपवानो छे। सांप लोटना, तो ईर्षा करना, अने मुहावरानो वाक्य प्रयोग पण करवानो छे। प्रश्न 8 आपने जे कहावत आपेली छे एनो अर्थ लखो। कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो एमां जवाब आवશે थोड़े समय का सुख। अने आ कहेवतना आधारे वाक्यमां प्रयोग पण आपणे करवानो छे, कि एवुं वाक्य लखवानुं छे जेथी आ कहेवत एमां आवी जाय। त्यार पछी प्रश्न 9, शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो जुओ, 4 प्रश्नोना शब्दकोशना क्रम में लखेला छे, तमे जोई शको छो। प्रश्न 10, एक वाक्यमां उत्तर लखो। पहलो प्रश्न,
એમાં જવાબ આવશે ગુણવાચક. બીજા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક તો 5 લડકે અને અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક કુછ લોગ. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન એમાં જવાબ આવશે વ. ચોથા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે 500 ગ્રામ નિશ્ચિત પરિમાણવાચક વિશેષણ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 11 સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. તો પહેલા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ઘ ભીતર. બીજા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ગ પ્રતિદિન. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન એમાં જવાબ આવશે ઘ વિસ્મયાદિબોધક. અને ચોથા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ઘ હર્ષિતને પરિશ્રમ કિયા इसलिए પ્રથમ આયા. પ્રશ્ન 12 કોઈ પણ એક વિશે નિબંધ લખવાનો છે. પહેલું છે પેડ હમારે મિત્ર અને બીજું મેરા પ્રિય ખેલ. તો વિદ્યાર્થીને જે વિષય ગમતો હશે એના વિશે પોતાની મૌલિક ભાષામાં નિબંધ લખશે. તો મિત્રો આ હતું ધોરણ 8 હિન્દી વિષયનું પેપર સોલ્યુશન. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો, તમારા બીજા મિત્રોને શેર કરજો અને તમે જો મારી ચેનલ ઉપર પહેલીવાર આવ્યા હોય તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી લેજો, જેથી આવનારા બીજા નવા વિડીયો ઝડપથી તમારા સુધી પહોંચી શકે. તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.